We are going to study today defects of vision and their correction. Okay, defects of vision and their correction. In the last class, we studied about the power of accommodation. Okay, the power of accommodation. What was that? What was that? The adjustment of focal length, right? The adjustment of focal length. What is the power of accommodation? It is the ability of the eye lens to adjust its focal length when we see the far away or nearby objects accordingly. Okay, so was this टॉपिक क्लियर टू यू रुद्र एंड सफिया बोथ ऑफ यू समझ में आया था सब कुछ Yes, ma'am. ओके सो अच्छा अगर हम पूछें कि when we see nearby objects when we see nearby object does the focal length of the eye lens get decreased or increased when we see nearby objects does the eye lens decrease or increase tell me Ma'am, it decreases. okay it decreases and according to you Rudra when we see nearby objects, focal length, what happens to the focal length? Does it decrease or increase? Rudra, are you there? Don't think that he's there. Yes, ma'am, I am. So, what do you think? That it decreases or increases? Decreases. Yes? Can you please? Decreases. Okay. Decreases. Why? Because ciliary, what happens to ciliary muscle? Ciliary muscle contracted or relaxes? Ciliary muscles contracted or relaxes? Contracts or relaxes? It relaxes. It contracted, nearby object. It contracted, right? It does what? It contracted. It pushes this lens towards each other. It pushes this lens towards each other. It contracts. Okay, it contracts. This is what in the very starting, I accidentally said that it gets relaxed, but here I wrote that it's contracted. In the end, I told this thing, right? So that it will be relaxed. It will be contracted when we'll see nearby objects. Okay, ciliary muscles nearby. If you are seeing nearby objects, focal length will get decreased. Ciliary muscle contracts. Okay, so ciliary muscle contracts and thus focal length decreases. And also, what other thing was there? Ciliary muscle contracts and what other thing was there? The power will increase. When F will decrease, the power will increase. Okay, the lens in the result that lens will get thick. Okay, so if we are seeing far away objects, then ciliary muscles does what? If we are seeing far away objects, ciliary muscle will do what? Relaxes. Does what? It relaxes. Okay, and then the eye lens, the curvature of the eye lens becomes small. Okay, it means that the power will, the focal length will increase. And hence the power will decrease, and lens will get thin. Okay, fine. Is it clear? Both of you say yes. Yes, ma'am. If no, say no. Okay. Now we will study the defects of vision. See, effects of vision. How we'll study the defects. First, we will see the corrected eye. How we see the things. How we see the things. Like if we are seeing this is your myopic eye. Okay, myopic eye means nearsightedness. Okay, means पास की चीज ठीक देख सकते हैं. Okay, अब what about the दूर की चीज? So if let this eye be healthy eye. Okay, this eye be healthy eye. If this is our healthy eye, then it can see it's very small. It can see the things. Then simply the image will form at retina, right? Image will form at retina. The sharp image will form at retina. This is your healthy eye. Okay, this is your healthy eye. Now, अपने ये जो आई है वो जो सही देख सकती है दूर के ऑब्जेक्ट्स को. अब क्या हुआ है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स का दूर का विजन जो है खराब हो गया. It means कि जो लाइट रे आ रही है, the light ray which is coming from far, this is our myopic eye that I am drawing here. The light ray that is coming from far, the image of that object is forming before retina. That we get a blur image of the object at the retina. Let me draw it very clearly. Here, so
The image has formed here itself, means in the this vitreous humor. Image has got formed in the vitreous humor, means a very blur image of this. If we are going to increase this, then we will get a very blur image of this, or very blur image of this object at the retina. It means we cannot see the objects clearly that is coming from the far, right? That is coming from the far. Now what to do with this? अब हम लोग को इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अब इसका हो क्या गया? इसका क्या क्या हो गया? अभी तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे focal length has got decreased, right? Curvature has got increased. Curvature increase means this thing. Curvature is what? Curvature is what? This is your curvature. If this is of if the lens will be like this, then the curvature will be small. If the lens will be like this, then the curvature will be large. The curvature will be large because our eye lens has got thicker. It means eye lens has got of this shape rather than this shape. This will be having less curvature. Curve is less. Now curvature means what? Curve, right? This is more curved than this, right? So this will be what? More curvature. Yes. Ma'am, is curvature the same thing as aperture? No. Aperture is something like this. Aperture is this thing. This thing is your aperture. Opened mouth, right? This is your curvature. How curved is the thing? How curved is the graph? How curved is the graph? Like this and this. So more curved is this, right? So we'll say more curvature is this. The thick lens will be more curved. So it will be having more curve, and this will be this curvature. So curvature has got increased. As a result, focal length has got decreased. It means its power has got increased, right? Right? Everything is this like directly proportional and inversely proportional. If the curvature is large, then the focal length will be small. And if the focal length will be small, the power will be large. Okay? Power will increase. So power of the myopic eye. This is the myopic eye. Okay. So we'll write here that it's myopic eye. Myopic eye. Power has got increased. Okay. Curvature has got increased. Focal length has got decreased. Now, what to do with this? How can this be corrected? Now, we need something that will decrease the power. We need that type of lens which will help in decreasing the power or increasing the power. Tell me, should the power be decreased, then it will be corrected, or should the power be increased, then it will be corrected? Rudra, tell me. Tell me. Yes, ma'am. You are here, right? Yes, ma'am. Okay. Should the power, the lens of the myopic eye has increased its power. Okay, the power has got increased of the myopic eye. To correct this defect, what kind of lens should we apply here, so that should we keep here in front of our eye, in front of this lens, so that it will correct this defect? Should the lens be should lens increase the power or decrease? Concave lens. No. I'm not asking about concave or convex. I'm just asking, should the power be decreased or should it be increased for correcting this eye? इसको सही करना है, हमें पावर डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है? मैम डिक्रीज है. डिक्रीज करना है, राइट? पावर डिक्रीज करना है, क्योंकि पावर इसका बढ़ गया है, हमें पावर बढ़ाना नहीं है, राइट? हमें पावर बढ़ाना नहीं है, ना पावर बढ़ाना है ज्यादा, ना पावर घटाना है ज्यादा, तो हमें पावर कुछ ठीक रखना है. तो ठीक रखने के लिए इसका मतलब अगर ये ज्यादा बढ़ गया है, कोई अगर बच्चा ज्यादा बिगड़ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? मार करके सीधा करना चाहिए, राइट? उसको समझा करके सीधा करना चाहिए. तो हम समझाएंगे, सीधा करेंगे कि उसको और बिगाड़ेंगे? उसको हम क्या करेंगे? समझाएंगे कि वो सही हो जाए. इट मीन्स उसका पावर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको हम डिक्रीज करेंगे. इसका मतलब फोकल लेंथ घट गया है तो हम उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. ओके. इन दैट केस व्हाट वील डू, we'll place and we all are knowing that the power of concave lens is in negative. Is it so or not? The power of concave lens is in negative. So if we'll apply the concave lens, if we'll keep take the concave lens, then it may help in decreasing the power. Okay. So we'll place one concave lens in front of the eye. Now see what it will do. Let me increase it. Now see what it will do. Concave lens in front of the eye. See. Now it will do what? It will actually try to fool this lens. ये इसको बेवकूफ बनाना चाहेगा. ये जो लेंस है ये इसको बेवकूफ बनाना चाहेगा. वो क्या कहेगा? What it will say, the light is actually coming from here, na? Light is actually coming from here.
far away, right? It will say कि light is coming. It will actually do what? It will divert this light. It will divert this light. Let me draw. Because it is a diverging lens, right? Concave lens is a diverging lens. It will help in diverging the light. So the light that is coming, the parallel rays of light that is coming towards the that is being incident on the concave lens, it will diverge the light. Suppose that it has got diverged. Sure. It will do what? It will diverge the light. It will diverge the light. It will say to this mirror, to this lens, that the light is coming like this. Light is coming like this. Then it will say, okay, then I can form its image on the retina now. This I can do now. I can do this thing now. अब हम ये काम कर सकते हैं, ये ऑलरेडी लाइट डाइवर्टेड आ रही है, अगर डाइवर्टेड आ रही है तो हम इसको अब रेटिना पे बना सकते हैं. ठीक है, पहले ये नहीं बना पा रहा था. क्यों? क्योंकि लाइट को ये इसका कर्वेचर जो था वो छोटा हो गया था. तो कर्वेचर छोटा हो गया था तो वो क्या कर पा रहा था, वो यहीं पर इमेज बना दे रहा, यहीं पे इमेज बना, विट्रोसिमर में ये इमेज बना दे रहा था. लेकिन अब क्या कहा, ये आ गया, ये इसकी हेल्प करने के लिए आ गया, कहा कि चलो ठीक है, हम बता रहे हैं तुमको कहाँ से लाइट आ रही है, जहां से तुम देख रहे हो वहां से नहीं आ रही है. तो ये बोल देता है कि चलो लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है. तो कह रहा है तो ठीक है, तो फिर तो हम इसका इमेज जो है रेटिना पे बना देंगे. अब हम बना सकते हैं. ठीक है, लाइट ऑलरेडी जो है डाइवर्ज आ रही है. अब बोलेगा कि हम इसको लाइट को अब हम इमेज को क्या कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द एरो. एंड नाउ आई कैन easily make the image of this form, the image of the object that is coming, the light rays that is coming from the object on the retina. And do you know the theory behind this? What actually is this is the thing that is being done, right? This is the thing that is being done by placing this concave lens. Okay, now what is the theory behind this? This is not going to come in your exam, that I am going to tell you right now. So what it does, what actually it does, you are seeing this light ray now. Safia, you are seeing this light ray now, that the diverged light ray, the light that has been diverged, right? So if you extend it, it will somewhere meet at some point here. Okay, it will meet at some point here if you extend it towards back. Okay, if you extend it, just draw it with the dotted lines. This is called reduced far point. Reduced far point. Reduced far point means now अब हम इंफिनिटी तक नहीं देख सकते. तो इंफिनिटी तक नहीं देख सकते तो कहाँ तो देख सकते हैं, ये कहाँ पे लेके आ गया, रिड्यूस्ड फार पॉइंट पे. एक्चुअली जो यहाँ पर इमेज रखी, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ये जो लाइट रे आ रहा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जो ये रे आ रहा है, वो जो इसको डाइवर्ट कर रहा है, वो एक्चुअली ये वाला जो दिस लेंस जो है, ये जो लेंस है, वो इस रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बना दे रहा है यहाँ पर. दिस इज द रियल इमेज. मीन्स ये वाला जो है वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. दिस इज वर्किंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट, फॉर दिस लेंस. Are you getting the point? Are you getting the point? This is our real object from where the light ray is coming. And then what this diverging lens is doing, this diverging lens is diverging this light, somewhat diverging this light, so that this lens can get help to form the image of this real object at retina. But what actually what is the actual theory behind this lens that you are seeing, that we have placed, right? This concave lens is actually forming. If you will extend this line, then it will meet somewhere here. It will meet somewhere here. It will be the virtual object. It will be the object. It's actually the object, the image of this real object. The image of this real object has got what? Made here, right? यहाँ पर ये बनी है image of the real object, which is called virtual object. This is the image of the real object. Okay, this is the image of the real object, which is called virtual object. कहाँ पे बनी है? It is formed at reduced far point. Reduced far point means far point has got reduced. अब हमें infinity तक नहीं दिखाई देता, लेकिन at some point हमें दिखाई देता है, जैसे 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, इतना हमें दिखाई देता है. तो वहां पर तक कहीं पर क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया. अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो वो देख रहा है, ये आप क्या देख रही है, ये जो हमारी आंख है, जो हमारा आंख का लेंस है, वो क्या देख रहा है, वो इसको नहीं देख रहा है. वो क्या देख रहा है, it's seeing this object which is working as a virtual object. It's actually the image of the object, image of the real object, but it's acting as a virtual object for this lens.
for this lens. Okay, the light ray is coming, it's seeing, ये देख रहा है कि लाइट रे तो यहाँ से आ रही है, लाइट रे तो यहाँ से आ रही है, हमें दूर थोड़ी रखा है, दूर थोड़ी रखा है ऑब्जेक्ट, लाइट रे तो यहाँ से आ रही है, हम तो इसका आराम से बना देंगे इमेज. So this is the theory behind this correcting the eye. Okay, so you need not to draw these things at reduced far point or something, right? You just need to draw the things that I made it earlier. This concave lens, this pink light ray, okay, and this pink light ray. Every pink light ray you only have to draw, not the blue. Okay, fine. You got the point now? Got the point or not? Ruth, you got the point or not? What I'm trying to make you understand. Have you got it? Everything? Ruth, tell me. I want answer. I want reply. Yes. Yes, ma'am. Okay. Sophia, you got now? Yes, ma'am. ओके, तो अब ये मायोपिक आई का समझ में आया. तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें कॉनकेव लेंस चाहिए होता है, सो दैट पावर किस में आए, नेगेटिव में आए, क्योंकि पावर इसका नेगेटिव में होता है, तो पावर नेगेटिव में आएगा, हमको पावर कम तो करना ही है, तो पावर नेगेटिव में हो जाएगा. ठीक है, ओके ओके. तो ये मायोपिक की आई में मायोपिक आई की बात हो गई, मायोपिक आई की बात हो गई. अब हाइपरमेट्रोपिक की हम हाइपरमेट्रोपिया की बात हम लोग करेंगे. हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस, is known as what? Far sightedness. Okay. Okay. Now hypermetropia. Hypermetropia is known as far sightedness. That far की चीज हम लोग ठीक ठीक देख सकते हैं. Far sightedness. Far sightedness is mainly among the old age. Okay. Mainly among the people of old age. Hypermetropia. ज्यादातर ओल्ड एज वालों को होती है, जो कि ओके ठीक है. फार साइटेडनेस. तो अब इसमें क्या होता है, पहले तो भाई हम फार की चीज देख सकते हैं, इसलिए हम बात करेंगे किसकी, पास की चीज की बात करेंगे. उसमें हम लोग दूर की चीज उसमें हम लोग पास की चीज देख सकते थे, इसीलिए हम लोग दूर की बात किए थे, क्योंकि पास की बात करने का कोई मतलब नहीं था, वो तो हमें ठीक से दिख रहा था. अब क्या है, ये फार साइटेडनेस में हम लोग को दूर की चीज दिख सकती है, इसलिए हम लोग किसकी बात करेंगे, पास की बात करेंगे. ठीक है, दूर की बात नहीं करेंगे, दूर का प्रॉब्लम है ही नहीं, तो दूर की बात क्यों करेंगे, हम लोग पास की बात करेंगे. तो दूर की बात किसकी बात करेंगे, पास की बात करेंगे. yes. अब पास की बात करेंगे. देखो लाइट रे आ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, लाइट इज इसका ओके फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट. नाउ इफ this is the healthy eye. Okay, I'm talking about healthy eye right now. So this is our object. Don't forget to label the diagram. Okay, so the image of this object will be formed on the retina, because this is a healthy eye. This is our image, not our image, but the image of the object. So this is very important. Okay, this is the healthy eye. It can see the things clearly because the image are forming at the retina, on the retina. Okay, now अब हो क्या जाता है हाइपरमेट्रोपिक आई में, हाइपरमेट्रोपिक आई इसमें क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिक आई में हाँ एक और चीज था, भूल गया. हाँ, देयर आर टू रीजंस ऑफ मायोपिक आई. वन तो होता है ज्यादा कर्वेचर ऑफ द हाईली कर्वेचर ऑफ द दिस lens. Okay, one is highly curvature of the lens, means increased curvature of the lens, and another is this myopic eye. I forgot to tell this thing. Myopic eye is due to the increased curvature of eye lens. Increased curvature means it means that focal length has got decreased, power has got increased. Okay, this thing. And second reason is what? Elongation of the eyeball. Elongation of the eyeball. आईबॉल अगर बड़ी हो जाएगी तब भी तो यही काम होगा ना. अगर आईबॉल बड़ी हो गई, अगर आईबॉल ये बड़ी हो गई, ये आईबॉल अगर बड़ी हो गई, if this eyeball will get increased, okay, तब भी तो यही काम हो जाएगा ना. if the object means the light ray is coming from here, right, light ray is coming from here, and the image will form somewhere here before the retina. The eyeball has got increased, right, the eyeball has got increased due to some reason. Right, due to some reason the eyeball has got increased. तो फिर से image कहाँ बन रही है, before the retina, and the same problem will come, right, and the same problem will come, and the same thing we have to do to correct the eye. Okay, understood now? Two reasons, that excessive curvature of the eye lens, and second is the increased elongation of eyeball. Okay, so here also it's excessive curvature of the eye lens and elongation of the eyeball. Okay, elongation of the eyeball मतलब समझ गए ना, आईबॉल ही बड़ा हो जाता है, तो इमेज जो बनेगी वो रेटिना पे कैसे बनेगी, वो पहले ही बन गई, रेटिना तो यहाँ पर है, ये इमेज यहीं पे बन गई. ठीक है, समझ में आया? हम दिख रहे हैं क्या, हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अरे बोलो, हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो बोला करो ना. ओके, Ma'am, yes, in a myopic eye, can we say that the thickness of the lens has increased?
ऑब्वियसली थिकनेस ऑफ द लेंस इज इंक्रीज, दिस इज लिखे नहीं है क्या हम यहाँ पर? थिकनेस ऑफ द आई लेंस इंक्रीज हो जाता है ना, तभी तो थिकनेस इंक्रीज हो जाता है, नहीं लिखे क्या हम? लिख देते हैं, थिकनेस थिकनेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। थिकनेस ऑफ द आई लेंस, ये मत कंफ्यूज हो जाना, थिकनेस ऑफ आई लेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। थिकनेस ऑफ आई लेंस ऐसे हो जाता है, आई लेंस ऐसे हो गया, इसका मतलब कर्वेचर भी ज्यादा हो गया, ये कर्वेचर ज्यादा हुआ ना, कर्वेचर ज्यादा हो गया, फोकल लेंथ छोटा हो गया, ये हो गया ऐसे हो गया, फोकल लेंथ छोटा हो गया। आई लेंस की फोकल लेंथ की बात करें, ये आई बॉल मत समझ लेना, ये आई लेंस की फोकल लेंथ वो बना रहे हैं, ठीक है। आई लेंस छोटा हो, सॉरी फोकल लेंथ छोटा हो गया, फोकल लेंथ छोटा हो गया तो पावर बड़ा हो गया, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ओके, समझ में आ गया ना? यहाँ पर थिकनेस क्या हो जाती है, बड़ी हो जाएगी, अरे सॉरी थिकनेस घट जाएगी, मतलब थिन हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आ रहा है लाइट रे, लाइट रे तो ऐसे आएगी ही ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे आएगी, ये कहेगा कि भाई हम तो कमजोर हो गए हैं, हम मेरा पावर जो है वो घट गया है, हम नहीं कर पा रहे हैं, ये लाइट रे भाग जा रही है, पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये लाइट रे भाग जा रही है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो वाला क्या कर रहा था, कुछ ज्यादा ही पावर हो जा रहा था, इसलिए पहले ही पकड़ ले रहा था, कह रहा हम पहले ही पकड़ ले रहे, लेकिन ये कह रहा है कि हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, ये भाग जा रहा है लाइट रे। अब क्या करें, भाई ये तो कमजोर हो गया, पावर इसका कम हो गया, पकड़ नहीं पा रहा, वो पहले ही पकड़ ले रहा था। ये इसका इमेज जो यहाँ बन जा रहा है, ये पकड़ ही नहीं पा रहा लाइट रे को, ठीक है। इसका इमेज पहले बाद में बन रहा है, ठीक है। अब बाद में बन रहा है, भाई ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई, एरो बनाना तो जरूरी हो गया है, प्रॉब्लम की बात हो गई, क्योंकि इमेज जो है वो बाहर भाग जा रहा है। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करें, अब इसका क्या हो गया है भाई, अब इसका क्या हो गया, क्या क्या हम लोग उसी उसी उसमें लिखते हैं ना, क्या क्या लिखे थे पहले हम लोग लिखे हैं कर्वेचर, फिर फोकल लेंथ। तो इसका क्या हो गया है कर्वेचर, इसका कर्वेचर क्या हो गया है, कर्वेचर कम हो गया है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ठीक है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे हो गया है, कर्वेचर इसका कम हो गया है, एंड फोकल लेंथ क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब ये ऑब्वियसली, अब ये कर्वेचर घट जाएगा, तो ये तो ऐसे, ये तो बड़ा बड़ा सर्किल बन जाएगा ना, इसकी जगह बड़ा सर्किल बन जाएगा, तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर घट जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर घट गया। अब क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, लेंस जो है वो, आई लेंस जो है वो थिन हो गया, ठीक है। आई लेंस जो है वो थिन हो गया, समझ में आया इतना चीज, आया ना कि प्रॉब्लम क्या क्या आ गई है। अब हमें फोकल लेंथ ज्यादा हो गया, पावर घट गया, तो अब हमें पावर बढ़ाना है कि घटाना है, वी हैव टू इंक्रीज इट्स पावर और डिक्रीज इट्स पावर। अब कोई इंसान कमजोर हो गया है, कोई बच्चा कमजोर हो गया है, तो हम बोलेंगे तुम लड़ो मत, लड़ने को बोलेंगे ना कि हाँ तुम लड़ो, थोड़ा सा अपने लिए कुछ करो, तो हम लोग पावर उसका बढ़ाना चाहेंगे ना। पिछली बार हम लोग क्या करे थे, उसका पावर घटाना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लड़ने लग रहा था ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा अपने लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे भाई थोड़ा सा पावर अपना बढ़ा लो, ठीक है, अपना पावर थोड़ा सा बढ़ा लो। तो पावर बढ़ाने के लिए क्या कौन सा चाहिए हमको, कन्वर्जिंग लेंस चाहिए कि डाइवर्जिंग लेंस, नेगेटिव में पावर चाहिए कि पॉजिटिव में पावर चाहिए, नेगेटिव में पावर चाहिए कि पॉजिटिव में पावर चाहिए, बोलो। पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, रुद्र किसमें चाहिए, रुद्र टेल मी किसमें चाहिए, मैम पॉजिटिव। रुद्र थोड़ा तेज बोलो प्लीज। मैम पॉजिटिव। करेक्ट, पॉजिटिव, मजा आएगा ना तेज तेज बोलोगे तो तुमने, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव किसका होता है भाई, पॉजिटिव दो ही लेंस ही है मेरे पास, एक कॉन्केव है कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव किसका होता है, पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है, तो वही लगाएंगे ऑब्वियसली। तो चलो कॉन्वेक्स लगा देते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लगा देंगे, ओके। एक हम लोग इसके आगे कॉन्वेक्स लगा दिए। अब कॉन्वेक्स लगा दिए तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, ये जो हमारा लाइट रे है वो क्या करेगा, ये तो ऐसे आ रहा है, ये तो ऐसे आ रहा है। अब ये कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है, ये तो कन्वर्जिंग लेंस है। ये क्या करेगा, लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज करा देगा, लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज करा देगा, थोड़ा सा कन्वर्ज करके भेजेगा। तो अब कन्वर्ज करके भेजेगा तो ये क्या आएगा, तो ये क्या होगा, ये कहेगा अब ठीक है, अब कन्वर्ज करके तुम भेज रहे हो तो अब भाई ठीक है, तो फिर हम इसका जो है इमेज आराम से हम रेटिना पे बना देंगे। इसकी ये हेल्प कर दिया ना कन्वर्ज करा के, इसको कन्वर्जिंग थोड़ा सा, ये तो बोलेगा कि लाइट रे ऐसी आ रही है, ये इसको बोलेगा लाइट रे तो ऐसे आ रही है, तो ये बोलेगा ठीक है, तब हम जो है इसका इमेज रेटिना पे बना देंगे। अगर ये यहाँ से आ रही है तो कोई बात ही नहीं। अब ये नहीं, ये तो बेवकूफ बन रहा है ना, क्योंकि इसका तो ये भी वही सेम थिंग, वही सेम थिंग, कौन सा सेम थिंग जो हम उसमें बताए थे कि इसकी एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट, ये जो है रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं पे बन रही है, जिसको कि ये ऑब्जेक्ट समझ रहा है, और हम उसे क्या कह रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, जिसे ये ऑब्जेक्ट समझ रहा है, लेकिन हम लोग उसको नाम दे दिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसके लिए ये यहाँ पर कहीं पर इमेज बनती है इसकी, इसको कहते हैं, कह सकते हो तुम लोग इसको इंक्रीज्ड नियर पॉइंट, आई गेस यही बोलते हैं, इंक्रीज्ड नियर पॉइंट, यही बोलते हैं, नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट, ओके फाइन, इंक्रीज नियर पॉइंट ही बोलेंगे, जो भी लिखा हुआ,
पता नहीं इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ये जो यहाँ पर से आ जाएगी, इसको मत बना के आना, ब्लू वाला पार्ट नहीं बनाना है। इंक्रीज्ड नियर पॉइंट, क्योंकि हम लोग नियर पॉइंट को इंक्रीज कर दिए, नियर पॉइंट, ओके, इंक्रीज नियर पॉइंट। और ये बोला क्या जा रहा है इसको, ये क्या है, ये क्या है, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये है क्या एक्चुअल में, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, जिसको भी नाम दिया जा रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि लाइट रे, इसको इसमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही बना दूंगी, इसमें वो एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इमेज बन रहा है, ये इमेज है। लाइट रे कहाँ से आ रही है, जैसे लग रहा है इसको ऐसा लग रहा है, ये वाले को ऐसा लग रहा है कि लाइट रे जो आ रही है वो तो इसमें से आ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको क्या पता कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है ना, लेकिन इसको दिख रहा है ये वाला, इस वाले को दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसका तो हम आराम से बना देंगे, ये तो दूर में ही है, हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूर में है तो दूर में बना देंगे हम, इसका यहाँ पर इमेज बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, हमको जो आराम से दिख जाएगा। तो समझे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट्स हैपनिंग हियर, कॉन्वेक्स लेंस इज हेल्पिंग दिस, or you can say making this lens full by increasing its power, by increasing its power, okay, by increasing its power it's helping this convex, it's helping this eye lens, our eye lens, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ये थ्योरी समझ में आई, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हुआ, Yes, ma'am. हो गया ना, कोई ऐसी चीज जो कि नहीं समझ में आ रही है, डायग्राम समझ आया सब कुछ, एवरीथिंग, Yes, ma'am. हाँ। अब नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, द फर्स्ट पॉइंट वाज कि कर्वेचर क्या हो जा रहा था इसका, व्हाट, देयर आर टू causes because of which hypermetropia occurs, right? तो hypermetropia के two causes, first cause is what, reduce in the curvature, right? Reduce in the curvature, focal length of the eye lens become large, or you can say reduce in curvature, or you can say anything, reduction in curvature, it means ki focal length has got increased, power has got decreased. And second reason is what, second cause of this hypermetropia is what, tell me. In the myopia it was elongation of the eyeball, and in this what we'll say, the eyeball has become small, the eyeball has become small, due to which कि जो इमेज हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ बन रहा है, पीछे, रेटिना के आगे, ठीक है। जिसकी वजह से अगर हम इसको फिर से दोबारा ये करें, ये क्या हो जा रहा है, आईबॉल शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल भी कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल भी कह सकते हैं, ओके। तो शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, जिसकी वजह से यहाँ पर से जो लाइट रे आ रही है, लाइट रे दैट इज कमिंग, कहाँ बन जा रही है, दूर पे बन जा रही है, तो कैच ही नहीं कर पा रहा है, दूर पे बन जा रही है। ये इसका आईबॉल छोटा हो गया, यहाँ पर आ गया, रेटिना यहाँ पर आ गया, इसका रेटिना यहाँ आ गया, बन ही नहीं पा रही है, ये यहाँ कहीं यही कहीं बन रही है, पीछे बन जा रही है, समझे। तो ये हो रहा है आई शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, सो ओके, to do some of the numericals में एक ट्रिक है, न्यूमेरिकल्स में एक मायोपिया के लिए ट्रिक है, एक हाइपरमेट्रोपिया के लिए ट्रिक है। तो मायोपिया के लिए, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, सी व्हाटएवर द गिवन थिंग्स वी विल बी हैविंग इन द क्वेश्चन, ओके। गिवन को हमें क्या ले लेना है, वी हैव टू टेक v, गिवन डिस्टेंस को व्हाट वी हैव टू टेक v, ओके, v मींस इमेज डिस्टेंस, ओके, v मींस इमेज डिस्टेंस। एंड अनदर थिंग यू को मायोपिक आई के लिए क्या लेना चाहिए हम लोग को, मायोपिक आई के लिए हम लोग क्या लेंगे, यू फार पॉइंट का रहेगा ना, प्रॉब्लम फार पॉइंट की रहेगी ना, तो इंफिनिटी रहेगी, बिकॉज फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी, राइट, यू विल बी ऑलवेज इंफिनिटी, and here you will be always 25 centimeter. Now another thing, Will it be negative 25 or positive? this is what I am going to tell you, that all of the distances we will take in negative, this v negative, v also in negative, all the distances will be in negative, infinity will be also in negative, because all of the images that we saw was forming in the left hand side only, right, in the left hand side only. So the v will also be negative and the u will also be negative, okay. So in every cases, in hypermetropia also and in myopia also, v and u will be in negative. For hypermetropia, u will be minus 25 centimeter, and for myopia, u will be minus infinity, okay, infinity. And if you take infinity or minus infinity, it will be 0, right, because we have to take 1 upon infinity in the question, okay. So what it will be, it will be in negative, okay. Now we'll see the question.
These things are there which we have to concern about. This will be the formula that we will be using for focal length, for calculating focal length, and for power we will be using 1 by f when it will be in meter, or 100 by f when it will be in centimeter. Okay, 1 by f when the focal length will be in meter, and 100 by f when it will be in centimeter. Now we have question. Let's see first this type of question. A person with a myopic eye, let's copy this. Okay. A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly. So this is given something. As already I have told, the given will be V. Just write it V. V is equal to 1 point, and it will be in negative. Okay. Remember always, it will be in negative 1.2 meter. V is minus 1.2 meter. You can also say minus 120 centimeter. It will be more easy to calculate. Okay. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? Not we have to find the corrective lens, type of corrective lens, also we have to find the power. Okay, power of the lens. So now to find the power, we must be knowing about the focal length. And for focal length, in order to find the focal length, we have to know about the U, that already we have to take as infinity. Okay, U as infinity. Now to find F and to find power, we have to find these things. F, 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. To put in the formula, V is minus V is 1 by minus 120, and minus 1 upon U, it will be infinity, so it will be 0. 1 upon infinity, or any number upon infinity, it will be 0, right? So it will be minus 1 upon 120. Okay, 1 by F, it's 1 by F, means F will be what? Minus 120 centimeter. Now we have found F. We have calculated F. The power is what? 1 by F. So it will be what? It will be 100 by F, because F is in centimeter. So 100 by F means 100 by minus 120. Don't forget negative sign. Don't forget signs. Okay. So negative 120 is 0. This, and then dividing by 5. So it will be 6. It will be minus 5 by 6. It will be more appropriate to convert it into decimal. So how much it will be? Minus 0. Minus 0.6 8s are 48. I guess yes. 6 8s are 48, and then 2 left. 2 left. It means 6 2s are 6 3s are 18. About 0.83 diopter. Okay, about 0.33 type of diopter. So it will be minus 0.8. Minus 0. Clear? Rudra, clear? Is the question clear to you? Yes, ma'am. Okay. Safia, you also? Yeah. Yes, Okay. ma'am. Okay. One question we'll do of the hypermetropy, and then we'll close. The power, and then you have to do this question. Okay. You have to do this question. This second question you have to do. Okay. And third question I'm doing. And this is the question, challenging question. It is very easy. Just the name of this question is challenging. Challenging question, you have to do it. Okay. So these two questions you have to do. And this question I'm doing. Old age question I'm doing. Okay. You'll send the questions on the group? Yes, I will. Right. I will send the PDF, and then question will be there. I will copy this question in another page so that it will come clear. It will be more visible to you. So I will copy this question on the question that I have given you as a homework. It will be in the another page. So an old age person, it means hypermetropia. The question is talking about hypermetropia. Okay, which color to take? An old age person can read the newspaper by keeping it at 80 centimeter in front of his eye. 80 centimeter in front of his eye. Always, we already have discussed that V will be the given, and it will be in negative, minus 8, without thinking anything. Okay, without thinking, just write it. V is equal to minus 80 centimeter. What is the nature and power of the lens? So U will be minus 25 centimeter, as already I have told. U for the hypermetropic eye will be what? Minus 25 centimeter. Okay, now we have to find first F, then only we can find power. Okay, first we have to find F. So very easy, 1 by F, 1 by V minus 1 by U. Just put it in the formula, and then minus 80 and minus 1 upon minus 25. So minus will get plus. Minus will get plus. So it will be plus 1 upon 25. So just calculate it. We can take out 5 outside. 1 upon 5. Sorry, 1 upon 5. So it will be 1 upon 16. 16 parts 80, right? Minus, don't forget minus. 1 upon 5. So 1 upon 5. I'm doing the mathematics thing, so need not to tell everything that what I'm doing. I'm taking the LCM, okay? 80. So it will be, I'm doing the correct 16 parts 80, right? I'm doing correct or wrong? Tell me, Safia, am I doing correct or wrong? Yes, ma'am, that's correct.
Okay. So 11 by 15, 5 8s are 40, 400. Means F is what? Okay, F is what? 1 upon F is what? It's positive. There, see, it's coming out to be positive, and it will be positive, right? Because in isometropic eye, we take convex lens. We apply convex lens to correct the eye. So it will be in positive, right? Focal length has to come in positive. So whatever it will be, you have to, you just want power. Okay, you can write it here, and you want power. So 1 by F. So it will be again the reciprocal. Means actually it's the power. Actually it's the power, right? So because we had to find the focal length also, so I reciprocaled it and then again re-reciprocal. So 1 by F. So it will be what? 100 by 4. Just try to figure it out. But that's in centimeters. Yeah, and power will be in diopter now. Power will be in diopter. It will be in diopter. Right? But we calculated the focal length in centimeters. We calculate the focal length in centimeter. This is the focal length that has come up in centimeter, right? And then we have to take 1 by F again because we have to find the power also. So power will be, and don't forget to put plus sign. Plus 11 by 400. So figure it out what it will be, what will be its decimal part. What will be its answer in decimal. Okay, so you can do it. And now, and now not, you have to do these questions, this and this. Okay. Question 2 and this challenging question, and try this also example. Okay, these 3 questions already this solution is given, so it's not very important to tell you that you easily can understand. Okay, and also these 2 questions you have to do. Fine, सब कुछ समझ में आया ना? ऐसा तो कुछ नहीं कि कुछ नहीं समझ में आया, तो ऐसा पार्ट आया ना? Yes, ma'am. मजा आया ना? Yes, ma'am. आया ना मजा? ऐसा नहीं, बोरिंग नहीं ना था चैप्टर? No, ma'am. ओके, तो अब अगले में ये पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट प्रिज्म. प्रिज्म बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा. ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे. ओके, वी कैन क्लोज इट फॉर टुडे. बाय बाय.